Kathak Kendra, the National Institute of Kathak Dance, is a premier dance institution of the country dedicated to promote the practice, development, and awareness of Kathak dance as a performing art tradition as a component of the rich classical heritage of the nation. At Kendra, a classical tradition is seen as constantly evolving body of practices, attitudes, beliefs, skills, and arts. Presently, Srimati Uma Dograji, the chairperson of the advisory committee of Kathak Kendra, and Srimati Pranami Bhagwati ji is the director of Kathak Kendra. आप सभी के उपस्थिति के बिना आज की संध्या की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप जैसे कला रसिक यहाँ उपस्थित हैं, तो हम कार्यक्रम का आरंभ करेंगे, लेकिन कार्यक्रम का आरंभ करेंगे उससे पूर्व पारंपरिक रीति से श्रीमती ओमा डोगरा जी, श्रीमती भगवती जी और आज की गेस्ट साहिबा डॉक्टर अर्शिया जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद आप सभी का। इसी के साथ हमारे जितने भी गुरु व गुणीजन यहाँ विराजमान हैं, उनको उनकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आज कथक केंद्र में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के उद्देश्य से केंद्र द्वारा विवेकानंद सभागार में सीरीज एम्ब्रेसिंग द अदर आर्ट फॉर्म्स पार्ट 3 नृत्य लेखन राइटिंग ऑन डांस पर व्याख्यान प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर अर्शिया सेठी जी प्रख्यात लेखिका एवं नृत्य विदुषी को आमंत्रित किया गया है। आपके साथ श्रीमती उमा डोगरा जी अध्यक्ष सलाहकार एवं श्रीमती प्रणामी भगवती जी निदेशक कथक केंद्र संवाद करेंगे। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर वुड लाइक टू शेयर बायो अबाउट डॉक्टर अर्शिया सेठी जी। वैसे हम सब वाकिफ़ है कि इनके परिचय की कोई मोहताज नहीं है, पर मैं कुछ शब्द इनके बारे में बताना चाहूँगी कि अर्शिया सेठी इज़ अ 1980 बैच alumni of Lady Shri Ram College, a Fulbright Fellow 2003 to 4. Arshia has had an active media career in print as dance critic for Times of India since 1987 to 1992 and as arts interlocutor and commentator on TV and radio. She was able to bridge her media skills and love for the arts in the national program for music and dance that she anchored for 25 years. तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी उमा डोगरा जी से, स्वागत करूँगी रानी खानम जी का कि वो यहाँ उपस्थित हुई हैं। डायरेक्टर प्रणामी भगवती जी से एवं आज की स्पेशल गेस्ट अर्शिया सेठी जी से कि वो मंच पर पधारे। We would like to felicitate Dr. Arshia Sethi ji with a bouquet and a memento.
धन्यवाद आप सभी का। और मैं पुनः फिर से दोहराना चाहूँगी कि इसी के साथ हमारे जितने भी गुरु व गुणीजन यहाँ पधारे हैं, विराजमान हुए हैं, उनकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करूँगी। फेसबुक से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स पे अवश्य हमारे साथ साझा करें। एंड नाउ विदाउट टेकिंग एनी टाइम वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू अर्षा सेठी जी। थैंक यू। मेरा हम दोनों यूज़ करेंगे सेम। नमस्कार एवरीवन, सभी गुरुजनों को प्रणाम है और सभी बच्चों को प्यार है। आप सबकी बिहाफ पे अर्षा जी हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एंड ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चे भी इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड हैं कि हमारी कला से जुड़ती हुई और कौन सी विधाएं हैं जिनको हम एक साथ लेके चल सकते हैं। इसीलिए ये सीरीज़ भी हमने शुरू की है, एम्ब्रेसिंग द अदर आर्ट फॉर्म्स। तो अर्षा जी, आपसे सबसे पहला जो मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ आप हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे अपनी थोड़ी सी लाइफ जर्नी शेयर करिए कि आप कहाँ से आती हैं, क्या आपकी एजुकेशन रही है और वो एजुकेशन किस तरह इस फील्ड से जाके जुड़ी है। जैसा कि मुझे पता चला कि आप भी एलएसआर कॉलेज से हैं, मैं भी एलएसआर कॉलेज से हूँ तो एलएसआर कॉलेज में जो पढ़ा और जो अब आप कर रही हैं उसका क्या लिंक बनता है, उसके बाद हम शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच उमा। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और ख़ास करके आपके साथ और प्रणामी के साथ बैठ के बात करने के लिए। आई होप कि आप सब जो यंग पीपल हैं एंड ऑल ऑफ यू हु जॉइंड ऑन फेसबुक लाइव, आप थोड़े से सवाल ज़रूर पूछिएगा। यू नो, इट्स सो थ्रिलिंग फॉर मी। पहले मैं सोचा कि पावर पॉइंट बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ। देन आई सेड नो, व्हाई डोंट आई जस्ट गो विद द फ्लो। Whatever question they ask me, I will answer truthfully and to the best of my ability. So, सबसे पहले मैं कहाँ से आती हूँ, उससे भी पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इस बच्ची ने जिन्होंने कंपेयरिंग की थी बहुत अच्छी तरह से मेरे लाइफ को स्मॉल पैराग्राफ में डाल दिया था। आज तक मैं अब ये काम नहीं कर सकती लोग मुझे कहते हैं कि मैडम आप ज़रा एक लाइन में बताइए आप क्या करती हैं, और आई कैन नेवर टेल देम मैं क्या करती हूँ बिकॉज ज़्यादा ही है, टू मच, एंड आई हैव नेवर फाउंड दैट वन वेरी ब्यूटिफुल पोएटिक लाइन बाय विच आई कुड सजेस्ट। आप लोग थोड़ा इस साइड आ जाएं तो शायद जो लेट आए उनके लिए आसान हो जाएगा। सो लेडी श्री राम में आने से पहले आई वॉज 16 years old when I joined Lady Shri Ram. So वो जो पहले 16 years हैं, they are formative 16 years. And उसी में नींव रखी गई जो आज 62-year-old Arshia sits in front of you and tells you about this beautiful life's journey. Before I begin anything else, I want to tell you I'm so grateful that I have lived this life. और बार बार I hope I get to live this life. I have lived a life जब आर्ट्स मेरे आसपास थी, the finest, greatest of the artists we could access, speak to, see, and मौका ही ऐसा बनता रहा कि उनके करीब 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 आके झांक झांक के देखा है। यहाँ पे कई सीनियर गुरुजन बैठे हुए हैं जिनके साथ इन अ वे मैं बड़ी हुई एंड इसलिए मैं उनके साथ थोड़ी इनफॉर्मल रहती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। But this is a privileged life. Simple example of it, मेरी cousins में से कोई नहीं है जो साड़ी पहनती है, कोई नहीं है जो साड़ी पहनती है। मैं हर रोज़ साड़ी पहनती हूँ। What a privilege it has been. उससे मैं इंडिया के अलग अलग प्रांतों के बारे में, उनकी खासियत, वीविंग्स के बारे में, टेक्सटाइल्स के बारे में जानती हूँ. So now people think actually that I am an expert on textiles. So how is this happening? But my cousins, they just have a good time. You understand the difference. They have a damn good time, but I'm the one who knows about many other things. So मैं जिस फैमिली में पैदा हुई थी उसमें ट्रेडिशनली डांस म्यूज़िक की कोई पोजीशन नहीं थी. आई एम अ सिख. द ओनली म्यूज़िक दैट एंटर्ड
हमारे घरों में वो शब्द कीर्तन, गुरबानी, संगीत, दैट्स इट। टिल और ये देखिए किस तरह कॉस्मोस आपके साथ जुड़ता रहता है। 1934 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ, नॉर्थ बिहार, नेपाल, एकदम इट वाज शैटर्ड। इसी टाइम था बाय द वे जबकि आर्चर जो कि सिविल सर्वेंट थे उस वक़्त, वो गए, उनको जिम्मा दिया गया था कि देखिए कि कितना डैमेज हुआ है, उसको इवैल्यूएट करें कि कैन वी रिपेयर और कैन वी बिल्ड अगेन। ये बिहार की कहानी है, ओके, 1934। एंड ही सेड वी हैव टू बिल्ड अगेन, बट ही इज ऑल्सो द मैन who first saw the Madhubani paintings. Till then, मिथिला के पूरा इलाके का मधुबनी पेंटिंग्स वो इन सिट्यू, दैट मीन्स वो अंदर जहाँ थी वहीं थी, हिलती जुलती नहीं थी, और वो वॉल्स पे पेंटेड थी। वो एक्सटर्नल वॉल्स पे पेंटेड नहीं थी, वो इंटरनल वॉल्स पे पेंटेड थी। इट टुक एन अर्थक्वेक टू ब्रिंग दीज ब्यूटिफुल इमेजेस आउट। और 34 के अर्थक्वेक के बाद जब उन्होंने कहा रीबिल्ड करना है, तो टेंडर नेशनली फ्लोट किया गया। और उस वक़्त तक मॉडर्न दिल्ली, जो लटिन्स दिल्ली है, न्यू दिल्ली, विच वाज बिल्ट बाय सिख कॉन्ट्रैक्टर्स, उनमें से एक मेरे परनाना थे और नाना थे, उनका काम ख़त्म हो गया था बाय देन। सो नए जगह कहाँ करें, तो उन्होंने वो टेंडर अप्लाई किया और मेरे नाना को मिला टेंडर। मेरे परनाना ने कहा कि देखिए इतना दूर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेना वोंट वर्क आउट, आप पटना शिफ्ट करें। इसलिए आउट ऑफ पंजाब, आउट ऑफ दिल्ली, माय फैमिली, माय मदर्स फैमिली मूव टू पटना। माय मदर वाज 40 डेज ओल्ड। पर एक बारी वो पटना गई, पटना वाज लाइक द सबर्ब ऑफ कलकत्ता। एक रात की ट्रेन जाती थी, वो इधर से इधर आती थी, इधर से उधर जाती थी, काइंड ऑफ थिंग। सो वहाँ पे एक बहुत माहौल था संगीत और ड्राइंग और डांस एंड ऑल का। और जहाँ पंजाबी लड़की पंजाब में डांस नहीं कर पाती, वहाँ पे पंजाबी लड़की बिहार में जाने के कारण, बिकॉज ऑफ दैट अनफॉर्चुनेट अर्थक्वेक इन विच थाउजेंड्स लॉस्ट देयर लाइफ, बट माई फैमिली टुक अ टर्न, और उस टर्न की बेनिफिशरी मैं रही हूँ कि सारे ऑल अराउंड मी, माई मदर लर्न डांसिंग, शी लर्न डांसिंग फ्रॉम डिसाइपल ऑफ अच्छन महाराज जी, उनका नाम मैं अभी मेरे को याद आ जाएगा अभी नाम उनका। और आपको याद है स्टेला उप्पल के फादर हरि उप्पल, उन्होंने पटना में आफ्टर द उदय शंकर सेंटर वाज डिसमेंटल्ड एक स्कूल खोला। My mother was the fourth student in the school, and my sabse badi masi was the first student in that school. So in a way the family's life has been involved with the arts. 1954 में जब नया इंडिया बन रहा था, तो there was a movement to discover more and more talent and organize it. लोग कहते हैं कि इंडिया का संगीत नाटक अकेडमी का फर्स्ट पर्पस था, फर्स्ट पर्पस, not forever purpose, but first purpose was to discover the wealth, the cultural riches of the country. और उस टाइम पे as part of this whole discovery, mentoring, nurturing process, इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल शुरू हुआ 1954 में। उससे पहले 1952 में शायद एक थिएटर वर्कशॉप की गई विद द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया। कितने कम थे, कितनी कम यूनिवर्सिटीज़ थी, कितने कम स्टूडेंट्स थे। तो उसके सक्सेस के बाद इट वाज थॉट कि इट वुड बी अ गुड आइडिया कि एक इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल क्रिएट किया जाए। एंड 1954 के फर्स्ट यूथ फेस्टिवल में मेरी मदर आई थी। वो यूथ फेस्टिवल के की हिस्टोरिसिटी ये है कि उसमें पहली बारी ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म उड़ीसी डांस की गई थी। उससे पहले not on a national platform. Those of you who are history buffs and dance history buffs may have read कि Sanjukta Panigrahi as baby Sanjukta had danced in Calcutta. Yes, in Calcutta in 1948 or something like that. But this is the first time on a national platform Odissi dance की गई।
सब लोग एकदम शॉक्ड रहे, स्तब्ध रहे, ये क्या डांस फॉर्म है, नो वन न्यू. सो उस टाइम उड़ीसी को बोला गया था क्लासिकल डांस उड़िया. They did not even know how to describe the dance. It was performed by Dr. Priyamda Mahanti Hejmadi. She was a young student from Utkal University. और वो दो बारी उन्होंने represent किया, एक बारी उत्कल को किया, एक बारी लखनऊ को किया. उत्पल वाले टाइम पे उन्होंने अपनी चित्ता, जिसे white dots ना, that चित्ता मेकअप किया था. Now my mother was a young girl and so was she, and beauty and all that was of deep interest to them. So my mother watched her, they became friends, they watched, and जब उनकी शादी हुई, मम्मी की शादी हुई, तब उन्होंने ये वाइट वाला मेकअप किया था, उनकी देख रेख में. एंड 54 में my mother danced. Shambhu Maharaj ji was one of the judges, and उन्होंने मम्मी को कहा कि आपको हमने प्राइज नहीं दिया. I don't think she had reached the level of the prize, but anyway, he said, he was very gracious. He said हमने प्राइज नहीं दिया because आपकी कॉस्ट्यूम बहुत अच्छी तरह से मैच्ड नहीं थी. So उस वक्त कौन, even to get this much information from my, okay, so then the first piece, 1954, was lost in dance history. Why? Because it came under the education ministry, universities and all. Nobody even looked at it. But what an important moment it was for dance. And Priyamda ji की कुछ साल पहले संगीत नाटक अकेडमी में रिकॉर्डिंग हुई थी. वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग करते हैं ना, हाँ उसमें. एंड बाय द वे उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने गेस्ट भी बुलाए. माई मदर इज़ वन ऑफ देम, तो वो भी आर्काइव में बन के बैठी हुई हैं. मम्मी भी, और मेरी मामी जिन्होंने फर्स्ट फेस्टिवल में पार्ट लिया था, दे आर ऑल इन दैट. सो प्रियमदा जी थ्रू मी अ चैलेंज. शी सेज, व्हाई हैव यू नॉट रिटन? तुम इस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में, इधर के बारे में, उधर के बारे में लिखती रहती हो. तुम्हारे घर में हिस्ट्री है और तुमने लिखी नहीं उसके बारे में. I just got such a shock because I realized how old and fragile everybody was. So I started 6 months में telephonic, Zoom, किसी तरह भाग भाग के जो आसपास की जगह थी, मैंने इंटरव्यू करके. The first and major writing on the 1954 Youth Festival was done by me. We put it in Nartanam, and you can still find it there. And then I used a segment of it for an international book that I edited on dance under the shadow of the nation. Because what was happening in 1954 was that the nation was asserting itself. What do I mean by the nation was asserting itself? The nation decided that we are going to represent ourselves through our arts, dance and music, and we are going to do it because we may be a young post-colonial nation, but we are an old civilization. तो इसलिए इस तरह से point make हो जाएगा. और उन्होंने 1954 के बहाने से non-घरानेदार artists को चुना. Sharan Rani ji was one of them. बाद में जो next editions हुए थे उसमें दमयंती जोशी, रानी करना, all of them had participated. एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो participants थे, they had to belong to a university, not to a घराना. So एकदम घराने वाले एक stroke में in a way out हो गए. When I looked at the list of all those who had participated, और जब हम रिसर्च के बारे में यदि आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, I will talk about it. I found कि only one sitarist musician had came from a घराना tradition. और वो भी कैसे? उनके father बड़ौदा स्टेट के म्यूजिशियन थे, और बिकॉज MS यूनिवर्सिटी उनके गुनीजन खाने से ही निकली थी, डिपार्टमेंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक, तो he was a university also, and he was from a gharana also. So this is how it became a very interesting process. ऐसी कई चीज़ें हैं. If you ask me deep questions, I will be able to answer them. But for the moment, so this is the background I come from.
My father was in government, very prone to be transferred, so my mother taught me first. My first guru is my mother. I was least interested. I think she just had some dreams that maybe I would become the dancer she thought she would be and all that. Least interested. Kathak. So, ये my mother used to say, मक्खियाँ उड़ाती हो तुम ऐसे ऐसे करके, ठीक से हाथ भी नहीं उठाती है, उठाओ ऐसे करके. And then a miracle happened. The minute I turned 12, I don't know what it was. Suddenly the saas became perfect. I became conscious of the movement, measured, hand stretch, ye sab kuch. No one taught me. She would go on from the age of 5. Ye nahi hai, wo nahi hai. I didn't bother. But suddenly 7 saal ke baad wo apne aap hi baith gaya. Now I don't know, maybe you all can tell me better what happens to the body that it then settles completely. So I did learn Kathak. I learned it in a fractured manner. जहाँ जहाँ पापा की पोस्टिंग होती थी, जो डांस स्कूल होता था, उसमें जो विद्या सिखाई जाती थी, किसी तरह से my mother would keep trying to stuff me into it. Obviously, North India में ज़्यादा transfers हुई थी, तो mostly Jaipur घराना was all over the place. Ganganis in Jammu also I learned from them. And so most of my tutelage was of the Jaipur Gharana, though my mother had her learnt in the Lucknow Gharana tradition. Yeah, I wanted to dance. This learning of dance opened me to miniature paintings. I started watching, seeing costumes, jewelry, poetry a little bit. And then जब मेरे स्कूल का ख़त्म हुआ, क्या पढ़ना चाहती हो, डीटी श्री राम में आए, join the work, the डांस क्या था, सोसाइटी एंड क्विज सोसाइटी एंड सब चीज़ की सोसाइटी. मैंने क्लास में नहीं बैठना है, सब चीज़ की सोसाइटी में ज्वाइन करना है. एंड आई हैड अ जॉली गुड टाइम एंड आई डिडंट डू टू बैडली आइदर. Okay, I have to tell you one secret. This is really funny and nobody is. So you'll be surprised to know that if you are there when Raja Reddy are around, तो राजा जी आज भी मुझे जुनून कह के पुकारते हैं. It is in no way a reflection to my junoon for anything. It is in fact that when I was in Lady Shri Ram College, in my first year, you remember Maria Kuto? English की टीचर थी. तो मुझे एक दिन मैसेज आया, Maria Kuto wants to meet you in the staff room. मैं कभी ना staff room गई थी, ना Maria Kuto से मिली थी, इसलिए मैं बड़ी gingerly पहुंची. And I said, Maria Kuto, Mrs. Maria Kuto. Yes, yes, come in. So I came in. She looked at me. I said, I was asked to meet you. I'm Arshia. Oh, रूप मैं ज़रा describe करती हूँ what she says. Oh, too. I'm wearing dungarees of denim, a loose t-shirt underneath, और तेल लगा हुआ है बाल में, और 2 गुत्ते बनाई हुई हैं. 2 गुत्ते. आज भी जब मैं जैसे मैं बैठती हूँ लिखने के लिए, मैं 2 गुत्ते बनाती हूँ. Not because it's a throwback on childhood. ग्लासेस बहुत अच्छी तरह से 2 गुत्तों में बैठते हैं, उसी में फंस जाते हैं. वो टाइटली 2 गुत्ते बना के और फिर rolled up rubber bands and all. She looks at me and says, how long is your hair? I said, about up to here. And she says, really? I said, yeah, I've rolled it up. She says, open it and let me see. I said, don't touch it because it's dripping oil, you know. अब जब oil है आप खोलो तो वो ऐसे करके, so like a spring it was. She said, अच्छा संडे को आ जाना, श्याम बेनेगल साहब कास्टिंग कर रहे हैं जुनून के लिए, और तुम्हें we can consider for the main role. She hadn't even finished it and like मुंगेरी लाल के सपने, I went, मैं तो मूवी स्टार ही बन गई. So मैं घर उस मूड में गई और घंटी पे खूब दबा दबा के घंटी बजाई. मदर ने डोर खोले. So what is wrong with you? I said, excuse me, you're talking to a movie star. She says, what? I said, Sunday को जाना है. Shyam Benegal wants to cast me in his film Junoon. You know,
I got a crackling thappad across my cheek, and that was the end of any junoon thing. Nobody supported me. वो टाइम थे और अब ये टाइम है. मैंने एक दिन वीकनेस मोमेंट में बता दिया राजा जी को कि मैं जुनून में एक्ट कर सकती थी, और उस दिन से वो मुझे जुनून बुलाते हैं. सो बेसिकली आई हैव कम इनटू द आर्ट्स बाय एक्सीडेंट. धक्का मुक्की, जोकरी, मस्करी, जो भी आप मान लीजिए, मैं ऐसे आ गई हूँ. जब मैंने परफॉर्म किया जयपुर में, विच वॉज माई फर्स्ट बिग परफॉर्मेंस, विच नमस्ते, अच्छा नहीं बोलती हूँ. तो उस वक़्त मैं वर्क कर रही थी, जयपुर में थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वर्क कर रही थी, which I joined because I wanted to avoid getting married, which becomes an obsession with Punjabi mothers. So I joined the State Bank of India, a disastrous decision by every standard, except कि मेरे हर ऑफिसर के साथ एक hey Aditi, hi, that's my bag. Sorry. No, that's why I just didn't want you tripping on it. Bag में कुछ नहीं है जी, क्या safe रहेगा. Anyway, State Bank of India was joined basically to keep the thought of marriage away from my mother. I had no interest, and that gave me a chance to learn in Jaipur, which was very good. कन्हैया लाल जावड़ा जी से मैंने सीखा. वो बहुत, may God bless his soul because he's not there. He was a demanding and angry person most of the time. वो एक डंडी सी मुझे फेंकते थे. If the speed was not right, and I learned, तत्कार करते करते एकदम ऐसे पैर में फटाक करके उठा सकती थी, क्योंकि नहीं तो गिट्टों पे गुड एंड प्रॉपर वर्ड लगती थी डंडी मेरे को. Anyway, it was a great time. I learned the dancing and all that. The bank was very amused to have a dancer banker. And I was wondering what I was doing there. गिनती का काम था जो मुझे फंसाता था वहाँ पे. उस ज़माने में in the bank वो सब नहीं होते थे. क्या होते हैं आजकल, कहाँ कंप्यूटर नहीं होता था and all that. So they would give me these big ledgers and say balance it. And I said how? He says देखिए ऊपर से हर पेज को ऐड करना है और फिर नीचे से चेक करना है कि आपने उसको ठीक ऐड किया कि नहीं. I went to him after an hour. I said वो आता नहीं है, ऊपर से एक आता है टोटल, नीचे से एक टोटल. And he told me, how do you do it? And I said, देखिए 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34. And he's looking at me and said, ऐसे नहीं होता है, इसको हिंदी में काउंटिंग करनी होती है. I said, okay. But at that time, I didn't know much by way of Hindi counting, because, you know, Hindi counting, every word up to 100 is a different word. Like, you know, you have to remember so many things. So anyway, that became a disastrous thing. And to add to the humor, एक दिन मैं खड़ी होके ना stand-up comic बनना चाहती हूँ. You know, I still have many ambitions that I want to fulfill, and I want to tell them the stories of this bank life and things like that. And the bank life then asked me, now balance all these 100 ledgers. And ledger upon ledger landed up. They made a killa around me. I also said, ठीक है, I went into the killa. I didn't balance one ledger, but I worked out a beautiful tumri protected by the ledgers. So I came into it really quite accidentally. When I was in Jaipur, somebody told me, Kian Prabhu, cricket fans might remember this name. He used to write on cricket a lot. He was the editor of the Jaipur Times of India. He turned around and he was the editor, and he was ever looking for new people to write. So I said, I would like to write. And I began writing features, chota chota. And then I got married and came to Delhi, and Prabhu said, I will introduce you to Times of India, Delhi. And Dilip Padgaonkar was the editor then. He asked me what I would like to write on, and not knowing that he was a Francophile, French expert, I told him I've done my MPhil in French foreign policy. So maybe I could write on France. And there was horror on his face. And he says, no, you said you like dance, so we are losing our dance critic, Mr. K.S. Srinivasan, god of all dance critics.
you can write in his place. I tell you, I nearly fainted right there. There was a blob of flesh. What are you saying? Anyway, he compelled this partnership. For 6 months or maybe a year, I walked around with K.S. Srinivasan sir. I learnt a lot from him. And then when he left Delhi because it had become too cold and things like that, then I started writing for the Times of India. What was this time, Ashya ji? I was at that time 27 years old. So education आप complete कर चुकी थी. Everything except the PhD. Okay. So आप डांस भी कर रही थी, तो आपको राइटिंग में कैसे इंटरेस्ट आया? Okay, so the dance कर रही, I did dance, but I did not dance like all these luminaries like you. Oh, please, no, I didn't dance like that. Vidla Vurla kuch ho gaya dance, that's fine. Okay. But when I got married and I knew now I have a choice of being in Delhi, at that time I spoke to my husband and said, I got pregnant right away, so the baby was on his way. I walk into dance criticism with the stomach up to here. My stomach would walk in first and then I would walk in, kind of thing. And I asked my husband, I said, now after the baby is born, then I will take to dance. And he said, yeah, I think it's a very good idea and all that. Except I got a prolapse disc giving birth to the baby, and then that stopped for a while. By which time I had begun writing and I said, isn't this the easier thing to do? So, laziness. Who knows? I have loved dance. I would love to dance. Even now, when no one's looking, I'm pretending that I'm dancing. But you need hard work to dance, which I guess I did not give. I probably wasn't even in a good health frame to do it at that time. So the decisions got taken. I went with the flow. And it has been the most rewarding experience, because had I danced, I would have been quite self-absorbed. But as a writer, I was curious and I could meet not just dancers from my area of Kathak, but dancers from all areas. Learn from everybody, mix, match, compare, think. Do my PhD from a dance from her region of Assam, which also has an interesting story. I'm telling you, going with the flow is good enough half the time. Today, I work internationally because of that 1934 earthquake, my mother's dance, and the whole story after that. In 1974, my father got transferred to first to Nagaland and then to Guwahati. And like all good Punjabi patriarchal families, my family decided we can afford to send one child to the hostel, and naturally it'll be the male child. It didn't matter that my brother was not interested in studies at all, that I was the studious one, but usko dal diya. Wo bhi could have been enough to destroy me, why him, and all that, but I just looked at it and I said, okay, I get to see the exciting places and all that. What I was heartbroken about was the fact that in 1974, India chose her first Indian women's cricket team. Remember that? They played the first match in 1975 against Australia. And this was the team that was captained by Shanta Rangaswamy and had the famous bowler Diana Idalji as the iconic bowler. The youngest member, because we don't do the team immediately which is the playing 11, you do a 30-member team or a 20-member team and all that. The youngest member in that selection and in this decision that we can only, one child has to come with us to the far-flung places of Nagaland and Assam, they said, it's okay, you come along. I said, what about my cricket? And I remember my father looking at me and saying, women's cricket, who bothers and all that. I said, national women's cricket. No one had any interest in it. So I lost a lot also with the going with the flow attitude. But I think
I gained much because the resistance in going against the flow, as I learn now in this old age, is very exhausting. You have to be lage raho like a woodpecker. You have to go on tuck, 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 tuck every day. And it's very exhausting. So maybe I wouldn't have been able to achieve if I had fought every battle that popped up in front of me. Let's say pop-ups होते ना आजकल, तो यहाँ तो battles ही इतनी pop-up होती हैं लड़कियों के लिए खास करके. And I was able to choose some of the battles, reject some of the others, get to see beautiful Guwahati. My God, from the air I fell in love with that place. I'm not joking, you know. I looked at it, I saw the Brahmaputra and excitedly yelled. Everybody around me probably remembers. Oh my God, that's the Brahmaputra and all that. I fell in love with the Sam. I knew I would come back to it, but I didn't know how. And eventually, I come back to it to do my PhD in the intersection of dance with politics. I looked at the politics of patronage that Satya gets in the pre-colonial, colonial, and post-colonial phase. I think she wants to ask something. Yes. Oh my God, there are lots of questions. Firstly, at the very first that she said that she couldn't describe herself in one sentence or one, subtitle because she's very dynamic. That's the reason why. Because she has done so much into art and the positivity that she has in her, that everything she sees beyond art, she just connect it with the art. And that's how I think you are very happy with the art. And when you said that you had many, breakages in between because you couldn't continue maybe as a dancer, maybe in the cricket team, or maybe for the Junoon. But somehow the positivity and the sparkling attitude you have in you, that have inspired also many. So just going ahead with your thing that you are a very well-known writer in relating to arts. So for the students, when they undergo a course, how much it is important for them to have a thought process on analysis as well as on the research-oriented topic associated with their dance form? I'd like to answer the question that you have asked me at two levels. My first level is about thought, soch. You know, I write a column in Nartaki. It's called Soch, because I think that is the fundamental. Dance happens in the mind. And I'm sure many people here will acknowledge that it happens in the mind. So keeping your mind alert, attuned, tuned, and responsive is very important. Art is not an opium that you dull your senses. इससे आपकी देखने की क्षमता, समझने की क्षमता को बढ़ना है, घटना नहीं है. मैं दुखी हूँ इसलिए मैं पैर पीट पीट के तत्कारी कर रही हूँ. No. Why are you doing it? Work smartly. To work smartly, you have to understand first what you're doing, you know. So I think the soch part is critical. Even if you do not write a word, because there are many people who may not like writing. I believe that there are multiple intelligences. Some have verbal intelligences. Some people can speak very well and not write. But you hear them speak and you're like wowed completely. Some people can visualize but not write. So multiple intelligence. First thing is you have to find your own intelligence. Is there anyone else who can help you? Yes. Only in the context of the arts, in the Guru Shishya Parampara, a sensitive guru can help you by identifying it even before you realize it sometimes for yourself. So in the direction, I think we owe this clap to all the gurus around us. When it comes to writing, it's about expressing or communicating. So आपके हाथ में तो एक skill तो है, एक form of communicating तो है. You can do it through your art. And you know, you don't even have to be very expert to do it. Let me tell you a small story. It's really a story I quite love. So in
2005, my husband, from whom I was already divorced, passed away. And he was very much into Western music, guitar, and Janis Joplin and Jimi Hendrix kind of fellow and all that. And every year he was working with the UN at that time, and every year he used to perform on 26 June, which is the World Day Against Drug Abuse or drug use or something. So now he was not there, and I met them for something, and they said, oh, we will really miss him. I don't know what got into me. I said, but the boys will perform. मैंने दो बच्चे मेरे. On what basis did I say that they had been learning tabla for about a year or year and a half? But they were learning like rat ke, and actually they wanted to learn drumming, and I put this whole thing saying drumming comes next. First you understand tal, and then everything will happen and all that. And I went and told Guruji, who was teaching them, कि आप इनको कुछ prepare कर दीजिए, 5-7 मिनट से ज़्यादा मत करिएगा, और इनको कुछ अच्छा करना है father की memory में, और very poignant moment होगा and all that. And I'm hearing every day बेसुरा बेताला बज रहा है and all that. If I peeped into the room, कोई बच्चा ऐसा मुंह बना के बैठा है कि ऐसा मुंह बना के concentrating kind of. And I'm thinking, saying, this is not going to work. ना तो इनके हाथ चलने वाले हैं, और ना ये expression is going to be a tribute to their father. So one day I sat down and I said, ऐसे नहीं है, तबला talks. उसको talk कराइए. Father की आवाज़ में talk कराइए. Mother की आवाज़ में talk कराइए. Poor Maitra sir was looking at us, wondering what it is. And then I said, एक बंदिश कोई भी बजाइए, जो भी तो बजाया. It ended with dha dha dha, and I turned around and I said, अरे तो इससे पहले कहेंगे कि जब भी हम father को बोलते थे, how cool is this man, he's smoking a cigarette, तो father कहता था no no no, like that. So इस तरह से, but it turned out to be such an interesting thing, because really जितना उनको सबक आता था, मैंने कहा एक चीज़ और नहीं सीखेंगे, जितना आता है इसी में से ये कहानी बनाएंगे, बात करेंगे. And tabla talk turned out to be a very interesting thing. These are two boys who were least interested, but all of you who've dedicated your life to dance and music, आपके लिए तो using this skill is the big thing. Now the second part to your question, writing in your art. Okay, part B of today's thing starts from this moment. You are doing Kathak, you are doing music, you're doing tabla, pakhavaj. What are the ways that writing intersects with your life? अभी थोड़ा interactive बना लें? हाँ, बताइए आप मुझे. In what ways does writing intersect with your life? आप कभी चिट्ठी लिखेंगे? India Habitat Center, 10 साल पहले, 20 साल पहले, जितने भी साल पहले, dear Madam Arshia Sethi, yeah, will you give me a performance? ठीक है ना, लिखेंगे. That's one kind of writing. आज भी the greatest dancers of India, greatest, सोच लीजिए, spend 2 hours in writing letters to people. So that self-promotion thing you write. आप जब लिखते हैं ये letter, तो आप इसके साथ क्या जोड़ते हैं? आप अपना बायो जोड़ते हैं ना. बायो कैसे लिखा जाता है? एक कहानी मैं सुनाती हूँ आपको इंडिया हैबिटेट सेंटर के टाइम की. Very distinguished old man walked into my cabin. He was from Dharwad type of place, where they undersell themselves, but are rich in their talent. So I asked him, I said, आप अपना बायोडेटा दे दीजिए. वो तो है नहीं. I said, कुछ भी नहीं है, CV हो, कुछ डिटेल्स नहीं. I said, तो आपको कैसे आपका प्रचार होगा and all that. देखिए मैडम, हम या तो गा सकते हैं और अपने आप को उसमें शाश्वत बना सकते हैं, या हम ये सब लिखेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे. I said, ऐसे करिए, मुझे तो आगे कुछ करना पड़ेगा ना. I was thinking of an HCL actually for him, because I realized that, but
I have to have a bio. So I said, आप ना कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ एक हिसाब से लिख के मुझे दे दीजिए. Now the हिसाब he thought was, first line, मैंने 2 साल की उम्र से अपनी संगीत की तालीम शुरू की. चमा ऐसे देखिए, ऐसे है जब तक आप 2 साल से आज आप जब 70-72 साल के हैं तो मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए. मैं तो फिर भी आपकी कीन हूँ and I'm interested in hearing, but the other person wants to know what you are today, what you did yesterday, what you did. So bios, for instance, are always written ulta. The today is more important thing. My God, I'm really giving you just the critical tips. Learn how to write a letter. You cannot sound entitled in the letter, but you can certainly represent yourself as the holder of a very important dharohar. Okay? Very important. If you're a young student and you do not mention your guru's name, what are the advantages or disadvantages you have? बहुत लोग मेरे को जैसे लिखते थे चिट्ठी तो गुरु का नाम नहीं लिखा उसमें, कोई अनबन होगी हो या कोई ऐसी चीज़ हो, but here's what I am reading, it's not written the guru's name. Does this person think he's Swayambhu in his art? And what does the guru tell me? It's probably of this caliber to have had such a guru, ऐसी learning हुई है and all that. इसका ये भी मतलब है कि the recipient of the letter should be a little knowledgeable also. They are not always, but you have to do your part of the deal. What other writings can you do? You write your notes. Notation लिखते हैं आप ऐसे? आप notes लिखते हैं? वो भी तो लिखना होता है, एक लेखन होता है. You don't have to write fair, neat, big words and all that. किसी तरह से जिसमें देखने के बाद आप समझ जाओ कि what was said in the class or what is it that you have covered in the class. So this note writing is very important. Do any of you keep a journal? Oh, nice. Wonderful. Can you tell us how you write the journal? How often you write the journal? Weekly. Regular writing of a journal is very important. It's very important when you are young because there will be little asides and gems in an oral transmission of knowledge that happens in our system. जैसे आप क्लास में आपने कुछ ऐसे कह दिया कि ये जो दूसरी तिहाई होती है ना, इसके लिए इतनी जगह नहीं बनी है तो आपको उधर से ही शुरू करनी होती है. Just this is the thing, otherwise you will not remember. Your notation is not telling you कि ये उधर से ही शुरू करनी होती है, you know, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, ये थोड़ी बेदम है or something like that. So writing journals for for younger students is very important. Writing journals for those who are witnessing history, and that is everybody, all of us, is very important. उस सेमिनार में क्या किया, किसने क्या लिखा, उसने क्या बोला, कैसे बात है. आपने कभी लीला वेंकट रमन जी के सुने हैं when she speaks on something? In 1980 in a seminar there, this guru, क्या कमाल की बात है, she is a living reference point. मैं तो उनको कल भी बोला और हर बारी बोलती हूँ, आकाश छोड़ दो ये रिव्यू शिव्यू लिखना, इसका कोई मायने नहीं है. अब जो मायने हैं वो ये है कि आप बड़ी लेखन करिए. पूरा you've seen eons change. Dance and music changes every day. And you've seen so much change. जो बंदा यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है उसको पास्ट का तो कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. And we all, and now I address this to the gurus, you know, it is so important to do your documentation. So important. Mohan Rao ji Kalyanpurkar passed away in 85. The first time anything was properly written about him was when the centenary
symposium was done by Shama Bhattiji. Okay? Because there was that seed work, I urged her that in COVID, we are all sitting here. If we do fresh interviews, new interviews, those not featured then, अब वो बड़े बड़े senior artists हो गए हैं, we can incorporate it. So keeping the journal is very important because that is what will help writing on you and your work. Otherwise, it is, while it is bookended with your life alone. Nobody else will have the time to chase you. Now, very important. इतनी सारी books सब लोग लिख के बैठ जाएं तो लिखेगा उसमें से कौन? Not everybody is for dance. Even if you have learned dance all your life, it makes you an excellent person, like a dance critic also. I remember I used to say, it takes a lifetime to make a poor dancer. Even a poor dancer, lifetime of effort goes into it. You can't kill them by dismissing, I reject, or I suggest she should never dance again, or he should never dance again. No. You have to keep on with the person. क्योंकि मैंने सीखा था और मैं थकी रहती थी जब मैं सीखती थी, पसीने पसीने होती थी, बाल knots में हो जाते थे. I knew it's so difficult. Look how much he or she has done. So you wrote with empathy and a little sensitivity and a little care not to kill everybody that, who it could have been a bad day. And you can't be authoritarian if you are a dance critic. Also, it today helps me understand things from the inside. So, जिसने सीखा है, वो अंदर की knowledge जानता है. That gives a very beautiful sensitivity and delicateness to your writing, जो बाहर का आदमी नहीं लिख सकता है. However well a historian may be in research and wants to write about the history of dance, they will not do, it'll be like बैंगन का भरता. Tup kind of thing and all that. It's not be written the way it deserves to be written. So even dancers who may not spend their lives dancing may spend their life in dance and more engaged in dance by taking the route of writing. That is my story. I have no shishas, but I have a life of dance. And एक दिन मैंने पैर नहीं उठाया, एक दिन वापस मैंने घुंघरू नहीं पहने अपने. हैं अभी भी हैं मेरे घुंघरू, but मैंने पहने नहीं है. We have a question from the Facebook live page from Indrayani Mukherjee. She's from Bombay and she is a Kathak dancer. She asked that art has evolved in many ways, yet there is a certain must do it like this element as mentioned in the Natya Shastra. Have you seen artists bridge this space and move to newer dimensions? What have your thoughts about this been? How do you perceive this movement ahead? Is it positively progressive? Thank you very much. Thank you. I think this is a brilliant question. It's one of my favorite subjects to talk about now. Okay. Are you aware of the fact that today in the arts, there is a very big discourse around the issue of caste and class? Are you aware of it? Are you reading anything that suggests caste and class? What is your position on that? Today you can no longer be a dancer and keep your eyes and ears closed to these realities. I mention caste and class for the simple reason that class and caste is not an individual or a group of individuals or a community that became the first community or anything. Caste and class is deeply embedded in many subtle ways. By saying that only one thing is the way, you have imposed or prescribed a particular format. Whose format is it?
Who is imposing that format? Are you considering what is behind this decision? So, I want to tell you that when the focus on the Natya Shastra first happens in Indian dance, can somebody pick me up from this point? Just remind me because I'll stray for a moment. It's really interesting that there is no awareness of the Natya Shastra in the satras of Assam. And yet the satras ka dance, satriya, hotriya as they call it, has been called a classical dance. Right? So technically there is no connection. But नाट्य शास्त्र became हावी इंडियन माइंड के ऊपर वो इसलिए हावी हुआ क्योंकि उसको it was used as part of the anti-colonial movement as we were trying to assert who we were. हम, our dance, our text, और हमें नाट्य शास्त्र मिला और हमने उसको एस्टैब्लिश कर दिया. देखिए, आप हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी मकॉलेज एजुकेशन मत करवाइए, हमारे पास तो इतनी पुरानी सिस्टम है कि हम इसको. पर वो उस वक्त अगेंस्ट in a particular situation, it was a very good and powerful way to counter. But today, are you going to shackle yourself with that? Because if there is the Natya Shastra, then there is Abhinay Chandrika, then there's Shri Hasta Muktavali, then there's Balaram Bharatam, then there is Sangeet Ratnakar, there is Hastalakshan Deepika, which is used amongst the Kathakali dancers. Kitne texts hain? Where is this thing that is one text is over the other? Unless you follow, you have now made your mind subject to a specific fixed hierarchy. In Natya Shastra sabse supreme hai. And where is it saying that the Natya Shastra is a prescriptive text? Why do you not see in it a descriptive text? कि वो आपको बता रहा है कि ये हो रहा है, हो सकता है, इसमें आपके ये व्यंजन्स हैं जो भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं. दिस हाथ कैन मीन दिस एंड इट कैन ऑल्सो मीन दिस एंड इट कैन ऑल्सो मीन दैट. It's just a descriptive text. It is not a prescriptive text. So I urge you to see the richness of texts. And who says a text is written? Texts are often carved, not as क्या कहते हैं उसको, जो के पढ़ते हैं ये लोग it's not just a manuscript, not manuscript, it's texted on walls and all that, na ki ye mandir itna inscriptions, right? It's inscribed through your sculptures. ओडिसी के poses क्योंकि यहाँ से आए हैं या यहाँ से गए हैं, उन्होंने लिया है या यहाँ से, we don't know. आपने पेरिनी तांडव का नाम सुना होगा? पेरिनी तांडव, पेरिनी? No? Okay, so in Andhra Pradesh, now Telangana, there is a temple in Warangal called the Ramappa temple. उसे हाल ही में UNESCO का World Heritage Site मिला है. There is a text saying that we had Perini, but no one knew. The form had died down. The text was written by Jayappa Sainani, who was the army chief of the Kakatiyas. Okay. But on that Ramappa temple, a panel upon panel of dance figures. So, Nataraj, his name is Nataraj, huh? Hyderabad में based है, Kala Krishnan के guru. He recreated the Perini Tandav. Nothing exists of it. Nothing. In the case of Odissi, you had something remaining in the Gotipur tradition, something remaining in the Mahari tradition. But in the case of Perini, we had nothing remaining. Only on the basis of those sculptures and lots of imagination, they created a dance. So why are we not looking at the dance that's texted there?
in the satras, there is no notation and there is no text. And I would urge you to read when some scholars say that Srihasta Lakshmana, what was it? Srihasta Muktavali is the text of Satriya. No, it isn't. It is shaming Satriya by saying that. Forget what I am saying. Please read what Kapilaji has written on that. That it is a text. That some hand gestures match. But there are many more hand gestures. And the book only deals with hand gestures. What about the rest of it? What about foot movements, head movements, eye movements? Nothing. So it can't be the text of Satriya. Okay? So there are no texts. Through mind and memory, the dance form is continued. They have a system called, like a peer review, peer and superior review. It's called Mahaladya. So every person who reaches a particular level and has to be from Bayan to say Borbayan, the senior Bayans are the dancers, by the way, who also play the instruments. Then all the Borbayans of the region are invited. He performs, they question him. If they find that the answers are satisfactory, then much like that moment in my PhD external interview, when I had to defend my thesis, at the end of it, there was silence. All the examiners looked at each other, and then the senior most turned around and said, "Well, we have nothing more to ask you, Dr. Sethi." And I was thrilled to bits. Like that, the Borbayan gets announced that from now you can call yourself a Borbayan. So ये भी text नहीं है, memory का खेल है. तो texts भी कई प्रकार के होते हैं. And why are we not looking at the texts of poetry and aesthetics that sometimes inform your dance? So the point I'm trying to make, Indrani, to you is that we can choose what we want to be shackled by. If you choose not to be shackled by things, then you can be unbound. And we have a wonderful example sitting right here in Aditi Mangaldas. The first time, Aditi, I want to talk about you. As dance, when you leave familiar shores, okay? I was a very new young dance critic, and Aditi did Letters to a Child Never Born, right? Yeah. For Kathak Kendra, in Kathak, I couldn't believe what I was seeing. I knew the poem because I like poetry, but the amazing treatment she gave it, and it used only the vocabulary of Kathak. It did not use the vocabulary of anything else, but it was totally unlike anything I had seen before. So please let go and explore. First, listen to your true heart. If it tells you this works, it will work. But you have to believe in it, and you're true. What is your intent? True intent, that will come through. Okay? So you can leave comfortable shores and go to challenging terrains, and you can do things. And it's very exciting, actually, when you move away from comfort zones. I remember I shared a moment of excitement with Aditi only. What is the footprints on water? Yeah, that name. I saw you dancing it, and I said, why aren't, and she said, what name to give it? And I suggested some variant of this. And yeah, okay, okay. Somebody else made a film, Shilpika Bordolo, and showed me the rough cut and said, I'm looking for a title. And I said, Going with the Flow, or One with the Flow. And that's it. It's traveling internationally, One with the Flow. So that is also writing. और कुछ नहीं करे. आप सुंदर टाइटल दे दीजिए. जीवन पानी जी जो टाइटल्स देते थे अपने प्रोडक्शंस के लिए या किसी के भी प्रोडक्शंस के लिए, आज तक वो याद रहते हैं. It's amazing, that poetic mind. Indrani, if you can just send a message saying that all your questions are answered, I'd be happy. Otherwise,
I'll एक take it. क्वेश्चन है जरा किसी बच्चे का है, अदरवाइज आई वाज आस्किंग यहाँ का कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कथक केंद्र के बच्चे कभी क्यों नहीं मुझसे पूछते हैं? मैं जब जब आती हूँ मैं यहाँ बोलती हूँ कम ऑन हिट मी एंड नॉट अ वर्ड कम्स आउट फ्रॉम यू ऑल. यू नो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बॉम्बे में, दे आर वेरी जेलस ऑफ ऑल ऑफ यू, यू नो. इससे कि दीदी आप इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ पे हम कर रहे हैं कथक केंद्र में, एंड वी आर यू नो दे आर फीलिंग वेरी सैड कि दे आर डिप्राइव्ड ऑफ इट. तो मुझे अभी आप, क्योंकि आप भी मेरे बच्चे हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आप क्यों नहीं ओपन अप होते हैं. वाई डोंट यू खुलिए, बात करिए. बट फिर भी आप नहीं पूछ रहे हैं, तो मेरी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ. सरिता कालेले कहती हैं, आपसे पूछ रही हैं कि व्हाट मेड यू सी द स्कोप इन दिस फील्ड, इन राइटिंग एंड जर्नलिज्म. Journalism a few decades back was not such a well-paying profession. Mainstream journalism may still have had its perk, but deciding to become an art critic was quite a bold decision. What led you to take this? Junoon. Yes. That's the only thing I can Yes. tell you. Yes, let me tell you that when I started writing for the Times of India, I was in my 27th year. I celebrate my 27th birthday as a dance critic for the Times of India. And at that time, we used to get 50 rupees per column. Okay, and sometimes because the column space was getting so little and I felt that 2 or 3 programs were important, I would put 2 or 3 programs into it and go and deliver it at the Times of India. And Mr. Patgaonkar told me, remember, even if you cover 4, we will only give you 50 rupees. So I don't think I even noticed when that little drop used to come into my bank. But at that time, I didn't type myself, or ye laptop shaptop nahi hota tha. That I used to write in whatever. I used to write on paper and go to a shop near Shankar Market where the very wonderful Sardarji gentleman used to type it for me. And he would try and make sense of my bad handwriting with scribbles and arrows here and there and all. But the bit that he just did this, मैं नहीं कर सकता. I had written some bowl. And said, मैं नहीं कर सकता. So I said, कोई गलती मैं कर देंदी है, and I did that bit, and it would be in one sweep. I'd go on to give it to the Times of India. So, yeah, you have to be obsessive about it. You have to enjoy it a lot. There is a lot of scope today, you know. There are, when Doordarshan began, and it began its archives, Doordarshan archives, it was a moment where all of us had to work extra hard because they were bringing out compilations, still amongst the finest compilations of Indian dance. Who's going to say archive to remind me? One of you has to say archive to remind me on this. Okay, but let me finish the story. Okay, you remind me. Okay. So, there was the Pravasi Divas that happened. I think it was the first Pravasi Divas, and they brought out 4 or 5 DVDs. And overnight we were writing and, you know, librettos, back, front, chota sa that has to be written on the CDs and all. There has to be a whole ecosystem of enthusiasm. You alone cannot do it by yourself. But today I think there is an ecosystem of enthusiasm. How much dance I see on TikTok reels and some other reels and things like that. Some people are speaking in it also. So, आप चाहें तो learning at the Kathak Kendra can be your overarching subject, one day at a time. And if you just talk about, and this may be an excellent idea for you to record those journal moments and things like that. You make your reel, but you say something today. What was the important thing that happened today? It could be a disappointing thing also that you weren't able to
arrive on some repeatedly, or it could be something interesting, or you could be joy for a friend of yours or somebody in your thing. At least your thoughts are getting a place. So I was a very anti FB person, you know. And then I realized कि ये मेरा journal ना शायद FB बन जाए. All the Cree Foundation activities are now on FB. When the lady who does the website rang me up and said, आपने फोटो नहीं भेजी, आपने ये नहीं किया, मैं कहा जी आप मेरे FB पे चले जाओ, सब उठा लो वहाँ से, you will get it. और order में जो कुछ missing हो, फिर आप मुझे बताइए, you know, then we can take it. So I think that today there is a lot of chances of writing, and things are much better than what it was in our times. Yes, Aditi. 2 मिनट मैं सिर्फ हमारे सारे स्टूडेंट सर्कल को बताना चाहती हूँ कि वी आर वेरी प्रिविलेज्ड एंड प्लीज़ गिव ए बिग हैंड टू ऑल द very senior dancers of our country, very renowned dancers of our country are here with us. Mrs. Gitanjali Lal ji, Aditi Mangal Das ji, रानी खानम जी, आप बड़े खुश नसीब हैं कि क्योंकि मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ, आपको उनका वेलकम करना चाहिए, क्योंकि जब मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, बट हम आज बहुत गर्व से अपने स्टूडेंट से शेयर करते हैं कि आई वॉज सिटिंग विद दैट गुरु व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू दैट गुरु, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा आप उनसे मिली हैं, आप उनसे मिली हैं, तो ये खुशी मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जब आपके सामने इतने ग्रेट आर्टिस्ट आज के यू नो दे आर सीजन डांसर्स ऑफ टुडे एंड दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट नाउ अदिति जी, गीता भाभी, गीतांजलि लाल जी, सॉरी मैं भाभी बुलाती हूँ आपको, यस रानी जी, प्लीज़ शेयर सम थॉट्स ऑन दिस सेम सब्जेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आर्टिस्ट लोग, जैसे मैं अदिति जी के बारे में तो जानती हूँ और अपने बारे में भी जानती हूँ कि एज एन आर्टिस्ट मुझे हमेशा लगता है कि हम लोग अपना कोई भी सब्जेक्ट जब चुनते हैं करने के लिए, आई थिंक वी आर पेन करते हैं उसको लिखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको 10 बार पढ़ते हैं, 1000 बार सोचते हैं. तो ये जो राइटिंग है, ये जो वर्ड है राइटिंग ऑन डांस, मेरे ख्याल से ये डांस के साथ साथ हमारा पैरेलल लाइन चलती है, ये आर्ट. तो इसको शायद डांसर को सीखने में इतनी मुश्किल नहीं होती है. मैं इस बात पे मैं चाहती हूँ कि आप जो डांसर्स यहाँ बैठे हैं इसको प्लीज़ शेयर करिए कि आपने ये जो राइटिंग है, लिखना, इसको कैसे अपने डांस में आप लोग यूज़ करते हैं. गीता भाभी आप तो बहुत अच्छा वैसे भी लिखते हैं, तो बताइए कुछ. नहीं, मैं तो इससे विपरीत ही बोलना चाहूँगी नहीं, बोलूँगी, क्योंकि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं. मैंने बचपन से जो सीखा वो अभी तक मुझे याद है. मैंने कभी कोई बोल नहीं लिखा, ना कोई ताल लिखा, सब इधर ही है. पर मैं चाहूँगी कि मैं अब लिखना शुरू करूँ, क्योंकि मेरी कुछ दिनों पहले ही बात हुई थी उमा से ही कि अब मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, मेरी सब यादें, और लिखूँगी नहीं तो लोगों को पता कैसे लगेगा. तो बस मैं यही कहना चाहती कि मैंने नहीं लिखा, पर अब मैं लिखूँगी. थैंक यू अर्शिया. नहीं, थैंक यू. नहीं गीता दीदी, वैसे भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सबक भी लिखिए, जो आपने तालें सीखी हैं, क्योंकि पहले कुछ ताल थी जो कि अब नहीं दिखती हैं. मे बी सिखाया जाता है, पर दिखती नहीं है. वो मैं भी सही कह रही हूँ, आप भी सही कह रही हैं, इसलिए मैं अब लिखूँगी. ज़रूर. And I think they make such wonderful readings, and internet ke karan, because now we can use the cloud space. So this is now my favorite thing. I पर मैं really think पढ़ती living बहुत हूँ. archives. मैं पढ़ती बहुत हूँ. So step 1 for लिखा नहीं writing है, is पर मैं पढ़ना. पढ़ती बहुत हूँ. मैं रोज़ पढ़ती हूँ, बचपन से.
Yeah. अदिति जी आप कुछ कहना चाहेंगी प्लीज? Thank you, Geeta Didi. I think it will be so important because our past informs our present and our present takes us to the future. So if somebody with a repository of your knowledge, your dance, must put it down in something, maybe not write, even record it. Because now the technology is such that we can record it, we can record your voice, we can record the videos, and I think it's very necessary because we have a long way to go. I can write about all the dancers, the gurus, and their work, and how it happened, how they created, how things happened, how the items were created in front of me. Like Maharaji, I can never forget my 10 years with Maharaji, Birju Maharaji. How he created music, how created dances, how beautifully choreographed compositions, I can never forget. I've learned a lot during those 10 years with Maharaji. जैसे अदिति जी ने कहा, लिखिए भी अगर हो सके तो आपने अपनी जुबान से उसको रिकॉर्ड करिए. हाँ, that suits me better. हमारा जितना भी बड़ा शास्त्र है वो सब ओरली कहे गए हैं. हाँ. बाद में उनको शागिर्दों ने लिखा है. बिल्कुल, हाँ. गीता दीदी कोई फोटोग्राफ्स भी हों तो उसका भी पुट टुगेदर करिएगा प्लीज. Yeah, sure. आप कुछ कह Thank रही you. थी अदिति जी? हाँ, दीदी. Actually, it's a question. Arsha, this is to your dance critic avatar. So it's bothered me, confused me. I've been concerned about dance criticism, not about the criticizing part. I feel dance without any criticism is like a river without shores, you know. So it'll just be everywhere. But what my concern is, and over the years, the more I read about dance writing, it's more reportage, what that person danced. I mean, when you dance, you may be at 200 people, 500, 1,000, 2,000 people. When you write about that experience, it reaches far beyond. And who is bothered whether you did Jhaptal or Dhamar, or was it in Vilambit for half an hour and then Madhya? No. What matters is what were the resonances within you. And somehow that gets completely lost. So I'm reading, okay, so-and-so danced this paran, sometimes even the bowls of the paran, that's fine. But we already have such a small space. And I'm confused as to why dance writing, which should be full of resonance, imagination, and how it has transformed your mind, body, and being. Because if I may, I feel dance not only starts with your mind, but it starts with your heart, mind, and body. And when all these three are in a simultaneous conversation with each other. So we never get to hear that. We only get to hear ye kiya. हाँ, आमद किया, परन किया, ठीक है, वो तो किया. What did that invoke in you? I mean, you dance Meera, fine. What did that Meerabai's poetry invoke in you? I somehow don't read it often. I can't say never. So I'm surprised that you're reading any of the dance criticism because I don't know where to find it now. That's true. So in my opinion, dance criticism is dead. This is one of those लोग कहते हैं ना, आपको पता है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था? ये whatever, some कूटने के लिए यूज़ किया जाता था क्योंकि वो अब टेक्नोलॉजी बदल गई है या वो चट्टी and something, you know, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था? Because अब तो सब कुछ अलग तरीके से होता है, मिक्सी में होता है या मदर डैडी से हम लाते हैं or something like that. So I do believe the dance criticism is dead. But writing on dance still That's is what I meant. not. Yeah. So in my years, which was a long time ago, you know, do you know my years of writing? It's from 87 to 92. That's the writing I did as dance critic for the Times of India. No one taught, no one anything. There was
just because I love dance and because Mr. Padgankar needed somebody to come in place of K.S. Srinivasan, who was so wise and knowledgeable, and he thought this chit of a girl would probably serve the job. Do you know, I used to break into hives every day. I used to be, the review जिस दिन आना होता था मेरे तो, now what's going to happen, now what's going to happen, I hope it's said correctly and not something wrong and all that. But for myself, I devised this thing. If I can see 50 years ahead and I can see 50 years behind me in that review that I have written, it can pass muster, otherwise, no. No instantaneous reaction, no anything. And hence, some of my reviews I still remember. And some of the performances that I saw, I still remember. There's one that I can cite here. It was a Kathak performance. Uma Sharma ji had danced it. You know that she loves her poetry. खुद गाती हैं, खुद भाव बताती हैं बहुत अच्छी तरीके से और काफ़ी डीपली. सो सप्रो हाउस में परफॉर्मेंस था, हार्डली द बेस्ट वेन्यू टू परफॉर्म. इतने I thought they were कीड़ा मकोड़ास running around, so I had put my feet up and I was sitting. लेट आई, बहुत आखिरी में उनका हुआ. शायद हॉल में 10 लोग बैठे हुए थे, उनमें एक मैं ऐसे कुकर टाइप बन के बैठी हुई थी ऑन द बेड. एंड शी बिगैन, आह को चाहिए क्या एक उम्र असर होने तक, तेरे जुल्फ के सर होने तक. एंड देन विच इज़ द वन शम्मा हर रंग में जलती है. So she was dancing that. Suddenly she lights the shama and she begins Navarasa. You know, I jumped up from my seat. All the legs on fear of cockroaches came to an abrupt end, and I just watched her, riveted. Because वो 10 लोगों में से पता नहीं और कितने समझ रहे थे कि वो हर रंग का जो जिक्र था वो नवरस में दिखा रही थी. And the piece was only about that magic moment for me. So that's why I remember it. I'm trying to put up, maybe by the end of the year, all my writing of the past, because पता नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने रखे हुए हैं कि नहीं. टाइम्स ऑफ इंडिया की थिंग में वो 4-5 साल या जितने भी साल थे वो तो मेरी ही राइटिंग है ज़्यादातर. सो इट नीड्स टू बी अवेलेबल टू एनी फ्यूचर रिसर्चर. So because realizing that dance criticism had ended, खैर मेरे लिए तो पहले ही end हो गई थी, but that as a rule it has ended, I moved to other writings. Now minimum 1500 to 3000 word writing में मैं कुछ एक सोच डाल सकती हूँ. So whether it is for the column Soch or it is articles anywhere, including on international platforms, where it becomes very difficult because you don't know what is the level of preparedness for absorbing this article. So what all do I have to explain and all that? I try and write at least this much. My favorite forms are writing long 8,000 word articles. That is actually what I thoroughly enjoy. 5,000 to 8,000 words, क्योंकि कुछ उसमें idea आ सकता है, कुछ थोड़ा history होना होता है, तो कुछ थोड़ा other influences, जिस तरह आपने ये imaginatively program किया है about embracing other arts and all that. For everything that's happening in dance, it is not just dance. It is dance plus. Sometimes it's dance plus 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 plus, you know, kind of a thing. So itna dance aap logon ne COVID mein kiya. Sangeeta sitting here made this lovely film and all that films, 2 of them I think. तो वो भी अपने आप में dance and a public health crisis. I cannot write about those films without writing about the dance and the public health aspect for it. So now I urge you, I think COVID has been a game changer. कि जब भी आप लिखें तो expansively लिखिए, intersections को देखिए. वैसे भी आजकल एक hot word है intersectionality. तो आप intersections अपने तो देखिए. कोई आपका डांस अकेला नहीं है. It functions in an environment. It functions in a literary environment, in an artistic context, maybe in a cultural context, sometimes even in a sociological context. Are you reading gender? What is this? How comfortable are you? Would you want to alter some of the things that you are dancing because now you're not comfortable with it?
So you have to put on a bigger thought. So Aditi, you're absolutely right. These important aspects were not getting their place in dance criticism. Aaj bhi it is a deeper and deeper sort of uh, description, but not sort of detailing of what it has done. It's just the details, listing. So no lists really. We are not looking for lists. We are looking for that magic that can come out of it. Dance criticism तब भी नहीं कर पा रहा था ज़्यादा और हर साल कम हो रही थी जगह. So it was good to say bye. But where are the spaces that you can do this? So I urge, of course, there's Sangana, Sangeet Natak, but I think you need to have many more, because I'll tell you why. If you want to take a critical position on some policy of the government, Sangana is hardly the ideal place that it is going to find a comfortable home in. So sometimes you need multiple, plural voices. That is when we will be able to absorb your writings. Sanjukta Vag, I think all of you know her. कोविड के टाइम पे उसने एक बहुत पावरफुल पोएम लिखी जिसका एसेंस है कि sometimes it's okay not to dance, because what you can do in that time may just enrich the dance further, you know. She wrote an amazing poem. So I edit an international journal on dance. It's called South Asian Dance Intersections, SADI. SADI, but in Punjabi, it's Sadi. Our dance, our voice, so Sadi. And we carried that poem. The theme for that was public health, dance and public health, kind of a thing. So in that segment, we carried that poem. हम लोग भी एक कथक केंद्र की तरफ से we are starting ना पॉडकास्ट Podcast, very nice. चाहते हैं कि We're starting with the newsletter. We're also starting with a newsletter podcast. also. Yes, because Guruji already said that you would like to also speak upon it. So we will be starting podcasting after the examinations are over of the Kendra. We'll be inviting great gurus where they can talk, because podcasts are very much listened in USA and UK. newsletter also we are Yes, starting. yes. So उसमें हम लोग इवन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि Writings. छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखिए डांस के ऊपर या अपने एक्सपीरियंस के ऊपर. एंड वी रिक्वेस्ट ऑल द गुरुज ऑल्सो प्लीज सेंड अस सम आर्टिकल्स टू एवरी मंथ. दिस विल बी डन. तो अच्छा लगेगा कि अगर सीनियर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कथक केंद्र की साइट पर भी उसको डाला जाएगा. संगीता इज ट्राइंग टू सेव फ्रॉम अ लॉन्ग समथिंग, यू नो. Even प्लीज Rani is saying, Rani आपको मैंने बीच में टोक दिया था. So Sangeeta, you say first. संगीता You say करिए. first. It's okay. Rani's. No, I'm just taking forward from what Aditi Di is just iterated, and that is what also was in my mind. So keeping that in mind, that where critiquing is somehow becoming reporting. So what do you think the eligibility criteria should be for a person who wants to be an art critic, or if somebody is aspiring for it, from where one should, learn, or what is the scope for? There is no learning. You have to find your voice. And what Okay? do you think the eligibility But- criteria? but- That is but important. this newsletter that they are saying, you must start writing. Do you even write about this? I mean, some people have a skill to write about the arts. Some people have a skill to write very well, but not necessarily about the arts. So you hear Professor B.N. Goswami speak, and you know that you have absorbed so much. Because yes, he will describe the painting, he will describe the colors, he'll describe the proportions of the figures. He's an expert of miniatures, particularly Indian art. But and then he will tell you that from this you infer, and that only आंख को शार्पन करने के बाद आप इन्फर कर सकते हैं. सो ये लिखने की आदत है, आपको बनानी है. मौका नहीं मिलता. अब ये थैंक यू वेरी मच, ये एक मौका मिल रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ गिव इन, कुछ भी हो, पोएम हो, पैराग्राफ हो, छोटा हो, मोटा हो, कुछ भी हो, बहुत डीपली यू फील अबाउट इट, प्लीज़ राइट इट.
But There I'm are just, hundreds of things. Sorry. हाँ, in संगीता. terms of giving mauka, at times, that is what we are endangering to getting a mauka and we are reporting. So, No, getting a mauka and you report. You will always report first. सबसे पहले आप अपना डांस में खुद अपने आप थोड़ी शुरू करते हो. पहले तो आप repeat करके, imitate करके करते हो and then you move on. But the moving on is very important. The failure कहाँ हुआ है is जब के पहले generations didn't move on. I mean, you have, yes, you have Ananda Kumaraswamy. And I have to tell you this business. So, I have left an incomplete research in the United States, New York, और मेरा बहुत ही मन खराब हो रहा है कि उनके rules ऐसे हो गए हैं, second vaccination ये करो वो करो, COVID hysteria बहुत है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ उसको ख़त्म. पर उस वक़्त when I was starting, I just did a lot of random reading. कुछ पता नहीं था, and I read a lot on Anand Kumaraswamy. I'm telling you, none of us know the man for what he was. कहाँ पे cult figure बना दिया उनका, कहीं पे कुछ और बना दिया है, expert है on paintings, and that he was the head of the Asia collection or the India collection at Chicago Museum. That's not all that there was to that man. He used to introduce, like comparing, for his wife's singing. And I'm reading the description of the way he's doing, and I'm saying, but I used to do something like this, because my comparing always was weird. किसी को पता ही नहीं लगता था what I was going to say. And so many times people say, आपने note बना दिया अपना? ऐसे नहीं जी नहीं, मैं तो मन से बोलती हूँ. First item तो मेरा ही होता है. Like in the first thing. So he used to do that kind of thing. He would link it with painting, he'd link it with poetry. You have lots of compares, very good compares. They stick to their job of comparing. But I also first stuck to that only. It's only as the confidence grew, as I saw something, I can say that today. So all this comes in slowly. First you have to learn to write the basic ABCD, or in the language of dance, do your first tukda, and then you take it on from there. I have a request from Dr. Shambhavi Shukla ji. Shambhavi is watching, I think. She's requesting that to throw light upon developing insight or vision among young practitioners and students, specifically referring to the Natya Shastra. You already... So I have already answered the Natya Shastra. Maybe it's not the way you would have wanted me to answer it, but I say that it is one of the many texts of India. It is a descriptive text, not a prescriptive text. I believe that the agency and autonomy lies with each dancer. You have to build yourself to the point when you can reach out and claim it as yours, but what you choose to claim from the Natya Shastra or any other Shastras related, any other related Shastras. On building vision and building insight, I cannot stress enough on how important it is to keep your mind alert, your mind absorptive. It should keep absorbing. You must go to see things, not only things that come occasionally. That's very important to see the occasional things, but you must go repeatedly to the museum. So repeatedly see the bronzes, see the miniature paintings, go to the jewelry gallery, go to the textile gallery, go and see how color is used by people. That's how by great minds, like great artists. So go to the galleries, go art galleries. This is very important. अंदर का जो एक चक्षु है, इसको खुलना होता है. बंद रह के वो खुल नहीं सकता है. If you block all access to your mind and say कि नहीं मैं बंद कमरे में रियाज करूँगा, तो it's not enough. It will not open that internal चक्षु. बंद कमरे में रियाज करने का कोई फायदा है? बिल्कुल फायदा है. वो जो concept होता है ना, 40 दिन आप बंद होते हैं and things like that. चिल्ला, हाँ, the चिल्ला, उसको चालिया भी कहते हैं, but चिल्ला जो है वो, I tell you can make out the dancer before the chilla and the dancer after the chilla. That
focus, but it shouldn't be more than 40 days, because you're blocking out the rest of the world, and it's a beautiful world and it's a very inspirational world. ये प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए आप उसको बंद कैसे करके रख रहे हैं, खोल के रखिए. गांधी जी also said, I would let the breezes of from all directions flow into my house, but I would not be blown away by that. So please go and watch opera. Maybe you get an idea. Please go and watch hip hop. Maybe you get an idea. Okay? So you have to watch a lot. Go and watch No. वो जो घंटा लगता है ना उनको स्टेज को क्रॉस करने के लिए, पूरी परफॉर्मेंस उसकी हो जाती है. वो स्थिरता आप अपने आप में डालिए. आप केवल उसको 1 मिनट के लिए प्रस्तुत कर दीजिए, देखिए कितनी तालियां मिलेंगी आपको. It's so important for the students to have dance analysis or research works or even visit as a field visit, like courses to be intended in such a way that teaching methodologists may have field visits and analysis on museums, like Dr. Sethi said. And any other questions from? Yes, please. मेरा सवाल है आपसे कि जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग लिखने में इंटरेस्टेड हैं डांस के लिए, सपोज़ जैसे अभी उन्होंने बोला कि यहाँ पे वो जनरल्स में लिखेंगे या यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस होते हैं तो उसमें भी अगर लिखेंगे, सो क्या आप इन बच्चों को ये सब बता सकते हैं कि एक क्रिटिक के लिए सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना ज़रूरी है, या एट द सेम टाइम कि हाउ द ऑडियंस रिएक्टेड, हाउ द इंटायर एम्बियंस, हाउ एवरीथिंग वाज इन्वॉल्व रिस्पॉन्सिव, सो वो लिखने में वो कहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है कि सिर्फ अपना इंडिविजुअल एक जो सोच है वो होनी चाहिए कि एक मिली जुली सोच के साथ में, वरना क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे हैं जिसमें ऑडियंस ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है और क्रिटिक ने बहुत ख़राब रिव्यूज़ लिखे हैं. तो प्लीज़ आप इसके लिए थोड़ा सा इन सबको, हमको भी थोड़ा सा. So just critic ने जो scathing review लिखा है, whether or not you got a standing ovation वो अलग बात है. Let us assume कि किसी critic ने scathing review लिखा है, उसको उस critic को लिखना है कि किस बात के लिए scathingness आ रही है. My likes and dislikes, not maverick play that has to happen. It impacts the lives of people and the opportunities that they have. So there has to be a reason given. And if the critic, like Subudu, आए दिन critical करते थे, तो काट पीट के चटनी बना देते थे. But वो जब बताते थे क्यों, it was a learning opportunity. तो या तो इस दर्जे का क्रिटिक हो, या फिर पब्लिक की clapping is enough. And most newspapers, because you're assuming that the piece goes in the newspaper, is happy getting many people rather than one person's opinion. I have been asked to write an opinion piece. Just now when I was coming here, the phone rang and I saw who it was, and I thought she wanted to interview me, but she asked me to write the piece myself. And she made it repeatedly clear, it is an opinion piece I am asking you to write. So मुझे history geography नहीं करना है, मुझे come to the point and say my bit करना है. But only 1500 words. Nothing. ये तो कल तक हो जाएगा opinion piece, kind of thing. Rani, but I want to hear from you. आपने मेरे साथ एक काम किया था black and white, ठीक है ना? And this was a very unusual program. कथक था, A to Z कथक performance थी. पर ये program था on Muslim personal law and the position of women, gender, minorities, religious laws, all of this came into it. I want Rani to tell us how she thought of it, how she came to me, and what we did after that. How do you do the research for a new piece? This is not the only way to do it. This is one example, because this is a new piece that is not just out of comfort zone, it's really far out of comfort zone. उसमें dancers ने बुर्का पहन के dance किया था, because it was a very focused piece. Today, I don't know whether we could have done this piece, but we did it then, and it's a piece that has outlived its life, but it's a very important archival piece. उसी के ऊपर मैंने कितनी academic lectures दिए हैं और कितनी writing की हुई है, और अभी भी पूरी नहीं हुई है. एक last writing मैंने करनी है, big,
on that. And it's really funny. I have a daughter-in-law जो lawyer हैं, और उनकी टेबल के सामने पड़ा हुआ था the book on marriage and Muslim person and law thing. Actually, the book has a far more provocative title. It's called Sex and the Supreme Court. She had that book lying on her table, and somebody came and said, must be a very interesting case. She says, no, this is not for me. She said, who is it for? It's for my mother-in-law. Kyun ji? Because she wants to write on that. And it's coming out of the work that Rani suddenly challenged me with. Rani, थोड़ा सा तो बताओ उसके बारे में. ये लो भैया, हाँ. उसमें तो लिखना पड़ा था. ये ले लो हेलो. भाई. हाँ. बिकॉज़ हम सब आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होते हैं, और आपके आसपास से जो गुज़रती है वो चीज़ें, आप उसको बहुत सेंसिटाइज आपको करती है कभी कभी, और लगता है कि एक ज़बान देनी चाहिए. हमेशा हम पोइट्री लेते हैं तो कुछ चीज़ें जो गुज़र रही होती हैं उसकी भी अपनी अपनी पोइट्री होती है. एंड आई हैव वर्क फर्स्ट, पहले तो मैंने स्पेशल जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए किया था, बिकॉज दे आस्क की, और ये 12 साल पहले की बात है एक्चुअली. और तो मैंने ये पीस किया था, और बहुत छोटा था, बट मेरे मन में था कि इसको एक लार्जर देन लाइफ किया जाए. एंड देन आई वेंट टू अर्शा दी. आई सेड ठीक है, हम लोग करेंगे. एंड अर्शा दीदी वाज, शी हैज़ टेकन 3 months, और आपने हमीदा बेगम के साथ काम करके, और बहुत सारे जो लोग समझते थे शरिया, इन सब को लेके, बिकॉज हम कहीं गलती नहीं करना चाहते थे. और हमने एक एक चीज़ पे बहुत काम किया, एक एक स्क्रिप्ट पे, कुरान के कौन से पल्ले में क्या औरतों के लिए कहा गया है, उसके मायने क्या कहेंगे. और फिर जो ग्राउंड पे जो प्रैक्टिस हो रही है वो बहुत ही बेमायने है. मैं रोज़ कुरान पढ़ती हूँ, आज भी पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ. उसके जो हम जब हम ट्रांसलेशन समझते हैं और करते हैं तो बिल्कुल गलत तरीके से होता है, बिकॉज़ वो अरबिक है और हम हिंदी हैं. इसी को लेके हमने 2-3 मुद्दा उठाया था, और हमने इसको ब्लैक एंड वाइट, एक ब्लैक और एक वाइट का हमने सिंबल लिया था. और उसका मेन हमने एम ये लिया था कि जो औरतें हैं उसको एक मुस्लिम या हिंदू और इन सब के ढांचे में ना रखिए, एक जनरल औरत के ढांचे में रखिए. और हमें बिल्कुल, हम इंडियन हैं तो हमें इंडियन औरतों की तरह ही राइट्स चाहिए. दैट इज़ हाउ हमने इसको काम किया था. कि जैसे तलाक़ हो जाता है तो फ़ोन पे तलाक़ दे दिया. और मेरी फैमिली में भी एक बहुत यंग लड़की को शौहर गुज़र गया, तो उसको 40 दिन तक दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया, हम लोग को मिलने नहीं देते थे. हम लोग ने बहुत ट्रोमा से गुजरे थे. तो मुझे लगा ये बेकार बातें, बिल्कुल बकवास है. एंड समहाउ मैं परफॉर्मर हूँ तो मुझे करना है, और इसीलिए शायद सोशल इश्यूज़ पे मैं बहुत ज़्यादा काम करती रही हूँ, और अभी भी करती रहती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है हर आर्टिस्ट जो यहाँ पे बैठे हैं उनको ये सब्जेक्ट भी लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक अलग डायमेंशंस को देता है, एक अलग चीज़ को नज़रिया देता है. दैट इज़ हाउ वी हैव डन. उसके लिए रानी को लिखना पड़ा था, बिकॉज आई रिमेंबर वेरी क्लियरली जब हम पहले रानी केम टू मी एंड सेड ढाल बनिए. आई सेड ओके, बट वी हैव टू डू दिस रिसर्च, वी हैव टू डू दैट रिसर्च. वो सब कर लिया. फिर हैबिटेट को पूछा डेट दीजिए, उन्होंने रमज़ान के बीच में डेट दे दी. रमज़ान में वो भी मुस्लिम औरत के राइट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो कभी आवाज़ ही नहीं उठाई किसी ने. पर हमें ये पक्का पता था कि हम जो कह रहे हैं वो सही है. तो एक स्कॉलर आता थे, वो बहुत अच्छे से पढ़ता था उस चैप्टर को, कि कुरान के इस हदिया में, इस सूरह में इस औरत के लिए ये कहा गया है, और प्रैक्टिस ऐसा है. तो हम सूरह नंबर देते थे, वो पढ़ते थे, और उसके बाद फिर हम उसको एक्ट करते थे. So it was very detailed work. Yeah. And Hamida, Begum, साइदा हमीद के पास हम गए कि हमारी कोई गलती नहीं हो जाए, because you know minorities have to be looked after in a very responsible sort of manner, and we didn't want any कि हमारे कारण कहीं पे कलेश मच जाए या कोई ऐसी चीज़. So उन्होंने अपना रोज़ा तोड़ा और उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया. बट उससे पहले जो रिसर्च उन्होंने कराई, आई थॉट आई वॉज अ टास्क मास्टर, बट शी वॉज अ बिगर टास्क मास्टर. और कभी रानी लिख रही है, लिस्टें भेज रही है मेरे को, हम लोग लिख के उसको काफ़ी अच्छी तरह से रिसर्च करके किए. देन द लॉ चेंज्ड, और उसके बाद हमारे वर्क का कोई रेलेवेंस नहीं था. सो
in a way it is a great joy. जब मैं हैबिटेट में होती थी मैं कहती थी आप अपना नया प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं हैबिटेट में करिए, बट मेरी दुआ है कि एक दिन आपका प्रोग्राम इतना बड़ा हो जाए कि हैबिटेट का ऑडिटोरियम छोटा पड़े और आप किसी बड़े ऑडिटोरियम में जाए. So the same way it was a delight for us. Yes. Yes, archive, right. So अब जब आप ये पॉडकास्ट करेंगे तो इसमें जो थोड़ा सा एक्सपेंसिवली हम लोग सोच लें द बिगिनिंग इटसेल्फ, तो क्लाउड के ऊपर सब कुछ रखना बहुत आसान होता है. आजकल बड़ी बड़ी म्यूजियम्स अपनी पूरी कलेक्शन क्लाउड पे रखते हैं. सो यू डोंट हैव टू गो टू दैट म्यूजियम और आप कोई चीज़ को देख सकते हैं. और गूगल का तो जो कल्चरल इंस्टीट्यूट है वो तो आपको एक एक पेंटिंग के ऊपर ऐसे ऐसे करके एक्सपैंड करके एक चिड़िया का एक पंख आप देख सकते हैं और उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटन होता है. ये tendency of museums to do this has resulted in a very happy serendipitous development. आपने पढ़ा होगा कि कुछ इंडियन आर्टिफैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स जो टाइम टू टाइम इन द कॉलोनियल पीरियड इंडिया से ले गए थे या उसके बाद भी आइडल थेफ्ट या कुछ होते होते चीज़ें गई थी, बिकॉज व्हेन दे पुट इट ऑन द लिस्ट, तो द idol theft wing, the most active of which is in Tamil Nadu, was able to follow those things and get some of them back. So my hope is, why am I saying all this? I think that the research material for future scholars is very inadequate. Aaj tak I have not been able to see the entire scope of the Mohan Khokhar collection, dance collection, but kitni bhi badi ho, पूरे इंडिया को समेट नहीं सकती है. इसलिए कितना कुछ खो रहा है. हर बारी एक आर्टिस्ट जब उनकी डेथ होती है, I just feel like, oh my God, so many things have gone unnotated, unrecorded, and they are lost to us. This is what makes us. Prime Minister Saab says, make in India. इससे ज़्यादा क्या make in India हो सकता है than Indian arts? आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि हमारा एक प्रपोज़ल हमने कथक केंद्र की तरफ से दिया था, क्योंकि हम कथक केंद्र में हैं तो प्रपोज़ल बिल्कुल हमें सिर्फ बजटिंग करनी है उसकी. हमने ये प्रपोज़ल दिया है कि जितने इस वक्त लिविंग लेजेंड हैं, लेट्स रिकॉर्ड देम एंड मेक आर्काइव दैट, एंड दे हैव पास्ड इट. लिविंग लेजेंड्स हु आर डांसिंग, हम लोग उन लोगों को रिकॉर्ड करना तो भूल गए, और जो भी कर नहीं सकते बट जो हैं, जो कर रहे हैं, उनके लिए ये काम अगले इसी कथक केंद्र के इस 23 में स्टार्ट हो जाएगा. That's This कथक केंद्र wonderful. is going to do it. वंडरफुल. और आप ना कुछ ऐसे हैं जो कि छोटे शहरों में रह रहे हैं या डांस नहीं कर रहे हैं, पर दे आर स्टिल देयर एंड दे आर एकदम still alert and no dementia or anything has happened. We must catch them. So they must. सबसे पहले जो बच्चों करना चाहते हैं, just call them to do the interviews. टाइम नहीं है, साइमल्टेनियसली 5-7 कैमरा यूनिट्स चले जाएं और करवा दीजिए. रोशन कुमारी जी फॉर इंस्टेंस, वी हैव टू गेट जो भी कर रहे हैं, जैसे अदिति जी हैं, हमारी गीता भाभी हैं, सब लोग कर रहे हैं डांस, फुल फ्लेजेड डांस कर रहे हैं. तो हम लोग तो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें एकदम. नो बट इवन देन पीक पीरियड में जब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं उस पर, तो उसका मज़ा अलग होता है. अब तब उस आर्टिस्ट को रिकॉर्ड करते हैं बेचारा जब चल भी नहीं सकता स्टेज पे. दैट इज़ वेरी सैड, यू नो. या यस यस. भगवती जी, Any more questions? आपकी जो इतनी यहाँ पे बनी हुई है मैंने देखा नहीं. I'd like to, I was about to ask you, like, teaching, yeah, this is going to be the last question. Like I said, the dance analysis, research and criticism, dance criticism, how important it is to be included for students. Can we include them as a theory part for them to energize their mind or thinking process? Because at the end of their degree or diploma, they evolved being a dancer along with some other skills too.
I think that certainly you should have some sessions on writing of dance, starting from the famous biodata letter asking for a program, writing on each other, you know, sort of friendly writing on each other. That'll help open up your, what is it that you want to pick up on this person? Have you noticed bariki, jo koi cheez ho, वजन छंद वो हल्के अंदाज whatever it is इसके लिए एक वर्ड्स भी तो निकलने चाहिए ना तो अभी तक तो वर्ड्स ही नहीं है तो हम लोग को I won't say standardize but we should get familiar with the words that you can use. Yes. Yeah, but you won't be audible in the recorded thing. Hello? Yeah. Yeah. So I was just saying, like, you wrote so many articles for Times of India. So there we have certain word limit. So it's a human psychology. When I'll see a book which has 500 pages, I might not read. But when I see a book which has more or less similar content, but which has 100 pages, I will read it because it has less pages. I just wanted to ask that is it important to write with less words and in a more effective manner? And how can we work on it? So there are writings that differ. This 1500 piece opinion piece, 1500 word opinion piece that I'm supposed to submit by day after is on a particular issue. So उसके सब पहलुओं को दर्शाना है. मैं तो फील कर रही हूँ कि 1500 वर्ड्स को मैं उसमें नहीं दर्शा सकती हूँ. But if you are watching a performance and you know that you have a column space of 300 words, तो आप उसको ढाल सकते हो. But उस परफॉर्मेंस के बारे में आप बस इतना और लिख सकते हैं. आप 500 पेज की बुक उस परफॉर्मेंस के बारे में बहुत कम बना सकेंगे. I mean, yes, if I saw, okay, you remember बहुत पहले पीटर ब्रुक्स की महाभारत परफॉर्मेंस हुई थी. मल्लिका प्ले द्रौपदी इन इट एंड थिंग्स लाइक दैट. अब ऐसा कुछ ग्रैंड चीज़ हो स्पेक्टिकल टाइप, उसके ऊपर मैं किताब लिख सकती हूँ. Because there are many aspects. There's the aspect of the story. Then how was it treated? How was gender looked into it? Is it Orientalism? Was it talking down? How dare you take our story and make bharta out of it or something like that, you know? So on that, one can write expansively. But if I see a young dancer dance for 30 minutes, I don't think I can write a book on that. So first you have to see what does your subject suggest. एक चीज़ जो मैंने आपसे नहीं बात की है और वो मैं करना चाहूँगी and don't think that it is very far from you. Kathak Kendra had a young girl called Siddhi Goyal. She was studying here. She was also studying at JNU. उसने अपने MA ख़त्म किया JNU से. And she has applied for IFA grant. She's working on Kathak and the films. अब आप समझेंगे फिल्मों में कथक ठारे रहियो and all that. That's not all that there is. क्या आप जानते हैं कि आज all actresses are told to learn Kathak क्योंकि वो emotions अच्छी तरह से depict कर सकते हैं फिर, you know. So in a way it is a theatre training, right? Now she's a Kathak dancer. She's still dancing. And she is also writing on this. अब जब इस सब चीज़ के ऊपर वो लिखती है, she has to do references, footnotes, endnotes, bibliography. She has to learn all that aspect as well. So जब research करते हैं, research, hardcore research does not happen on Wikipedia. Please note that. जे किताब लिखने लगे हो तो वो विकिपीडिया की रिसर्च से नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है? You have to read the books. You have actually something called Survey of Literature. तो आप उसको पढ़ेंगे, उसको
उससे एनालाइज करेंगे कि these aspects are covered, these aspects are not, so now I should write on those aspects जो covered नहीं है. नहीं तो आपकी नवीनता क्या है, आप वही कट पेस्ट करके डाल रहे हैं. और ये है डांस की बिग प्रॉब्लम. राइटिंग ऑन डांस हैज हैड दिस एज अ terrible problem. People have cut and pasted and picked without acknowledgement. Cannot pick without acknowledgement. आप आपको कुछ अच्छा लगा, आप बोल सकते हैं आई सॉ दिस परफॉर्मेंस. और कथक वाले तो बोलते ही हैं स्टेज से, तो आपको ये एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है. सेम वे इन योर राइटिंग ऑल्सो यू विल बी एक्नॉलेजिंग. आप ऐसे थोड़ी है कि निराला की कोई पोइट्री लिख देंगे, चाहे दो पंक्तियाँ लिखें और ट्राइंग टू पास इट ऑफ, ये तो मेरी है. नहीं, nobody is going to believe it and you will get into major trouble on plagiarism. So when you do academic writing, which is different from popular writing or column writing, that has a whole different ball game. और उसके बड़े स्ट्रिक्ट कायदे और कानून होते हैं. और आजकल ये समझना कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बाकी सारी दुनिया पागल है, it's not going to work because you have algorithms. So you have software that picks up plagiarism. जब हम लोग सब कोविड के टाइम पे we went online, you know, we all went start doing festivals online and things. कितनी बारी परफॉर्मेंस होते होते वो गायब हो जाती थी because the music was picked up from somewhere without permission. Now you would tell me, as really happened, मैंने ना परमिशन ली थी दादा से, पर पता नहीं क्यों ऐसे हो गया. पर दादा ने वो एल्गोरिदम को इन्फॉर्म नहीं किया. एल्गोरिदम इज नॉट ह्यूमन बीइंग कि वो सुने आपकी कहानी, समझे आपका दर्द or anything. Algorithm just works and off you went. So these are issues that are more pronounced when it comes to writing. You cannot pick up somebody else's work and try and pass it off as your own. Okay. So should we end it on a happier note or on this unhappy note of problems? Thank you very much for your attention. Once again, thank you very much, अर्शिया जी. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके. और सबसे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारे फ्रेंड्स जो हैं यहाँ पर हैं. अदिति, मैं बहुत खुश हूँ आप यहाँ आई. यस, क्योंकि रानी जी हैं, भाभी, ये तो आप लोग आते रहते हैं, बट रिति आप बहुत कम आती हैं. तो हमारे बच्चों के लिए बड़ा इनकरेजिंग रहा कि आप भी आई. कुछ लोगों को अभी मैं एक मैसेज पढ़ना चाहती थी जो इससे ताल्लुक़ नहीं रखता था. तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर अदिति जी की वर्कशॉप रखेंगे तो हम वहाँ बॉम्बे से आएंगे. लेट हर टॉक अबाउट द बॉडी मूवमेंट्स एंड बॉडी लाइंस. तो मेरे ख्याल से हमें जल्दी अदिति जी की वर्कशॉप रखनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि देयर आर मैनी पीपल हु आर रेडी टू कम फ्रॉम द फार एंड्स ऑफ द कंट्री. So I humbly request all of our Gitanjali Lal ji, Gita Bhabi, please come on the stage. We would like to felicitate you. Aditi ji, please come on the stage. Please Bhabi आइए. मैं दूँगी.
I'd like to thank each one of you who have come here to witness the event, and we'll be bringing more such colors for your refreshing knowledges. And also, I'm grateful to all the senior gurus who have come here and honored our space. Time to time, we will be having more master classes, workshops, and carrying ahead with this Embracing the Other Art Forms series further after the examinations. I would like to hand over to Umaji to end today's event with her note. मुझे ये भी इस बात की भी बहुत खुशी है कि हमारे एडवाइजरी बोर्ड की जो दो मेंबर्स हैं विधालाल जी एंड संगीता जी इज़ आल्सो प्रेजेंट हियर. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. क्योंकि मैंने पहले भी आप सब लोगों को कहा था कि हमारे बोर्ड में हमने पहली बार ऐसा हुआ कि 2 यंगस्टर्स को लिया है. उसकी वजह सिर्फ आप हैं. हम चाहते हैं कि कोई भी आपकी लाइफ में कुछ भी अगर आपको इंस्टीट्यूशन में या कोर्स वाइज या कहीं पे भी कुछ ऐसा गलत समझ में आता है कि आपको कुछ कहना है, हमसे नहीं कह पा रहे हैं, तो आप इन दोनों से कह सकते हैं. दे आर दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट एंड देयर फ़ोन नंबर्स आर ऑन द साइट. टॉक टू देम, शेयर योर प्रॉब्लम्स, शेयर योर हैप्पीनेस, शेयर योर वट एवर यू वॉन्ट टू टॉक टू देम. एंड थैंक यू वेरी मच. अभी भी मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप सब लोग बहुत आराम से डिसिप्लिन होकर बैठे थे, बट फिर भी मैंने देखा कुछ लोग फ़ोन पे ऑन थे, विच आई डोंट लाइक इट. And the few who are going out of, is a really sad thing. Some seniors are talking and you are going out. It's not acceptable. So, यहाँ पे आपके एग्ज़ाम्स में आपके मार्क्स कट जाएंगे. अगर आप not giving a respect to the artist, your marks are cut there in the exams, and they are just on end of this month. So thank you very much, but I love you all. Believe me, दिल से बहुत प्यार करती हूँ आपको. चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा इस हिंदुस्तान के मानी कलाकार बने, वो किस भी फील्ड में जाएं. बेशक आप जर्नलिज्म लें या राइटिंग वर्क में जाएं या लाइटिंग वर्क में जाएं या जैसे हमने पिछले कुछ भी करें आप. और जब वर्कशॉप होती जाएंगी आपको समझ में आता जाएगा कि कितने एवेन्यूज़ हैं, कितने चीज़ें हैं आपके लिए. दरवाजे खुल जाएंगे जब आप यहाँ से निकलेंगे. 1 साल के बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू एवरी वन ऑफ यू. हम्बल प्रणाम टू ऑल. थैंक यू.